Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Harsh Ranjan. नमस्कार, हाजिर हैं मार्केट मंत्र के एक और ताजा अंक के साथ। इस कार्यक्रम में देश विदेश की आर्थिक खबरों का जायजा लेते हैं, साथ ही नजर डालते हैं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजारों के चढ़ते उतरते ग्राफ पर। बात करेंगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, और खबरों की बारीकियों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इकोनॉमिक एक्सपर्ट उदयन रे। उदयन, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। And now let's begin today's edition with the headlines in English. Thank you, Harsh. Domestic benchmark indices end with gains. Sensex adds over 690 points. Nifty reclaims 24,200 level. India aims to increase contribution in global space economy from 2 to 10% in the coming years, says Science and Technology Minister Jitendra Singh. And global crude prices continue upward trend. Brent crude and WTI gains over 0.5% each. घरेलू शेयर बाजारों में आज बढ़त। सेंसेक्स 690 अंक तो निफ्टी 218 अंक बढ़ा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आने वाले वर्षों में वैश्विक अंतरिक्षीय अर्थव्यवस्था में भारत की भागीदारी 2% से बढ़ाकर 10% करने का लक्ष्य है। और कच्चे तेल की कीमतों में बढ़त जारी है। ब्रेंट क्रूड और WTI की कीमतों में आधे प्रतिशत की बढ़त। कल का जो शेयर मार्केट था भारत का, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज काफी उतार चढ़ाव भरा रहा, उसमें गिरावट भी रही थी। लेकिन कल की गिरावट के बाद आज घरेलू शेयर बाजारों में उछाल रहा है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 694 अंक मजबूत हुआ आज और 79,477 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में 218 अंक की बढ़त रही और यह 24,213 पर रहा। विस्तारित बाजार में बीएसई मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों में 0.44% की बढ़ोतरी रही। सेंसेक्स की 30 कंपनियों में से 21 कंपनियों के शेयरों में आज बढ़त रही। डिटेल रिपोर्ट के साथ अनुभव। Domestic benchmark indices edged higher today, led by gains in metal and bank stocks. Both indices recovered from losses incurred in the intraday trade amid uncertainty surrounding the US presidential election and the US Fed interest rate decision. The 30-share BSE Sensex advanced 694 points or 0.88% to close at 79,477, while the NSE Nifty 50 added 218 points or 0.91% to settle at 24,213. The broader market at the Bombay Stock Exchange also ended in positive territory. The mid-cap index and the small-cap index gained over 0.4% each. In the Sensex index, 21 out of 30 companies locked gains. Among the top gainers, JSW Steel surged over 4.5%. Tata Steel gained more than 3.5% and Axis Bank added over 2.5%. Conversely, in the laggards, Adani Ports dropped nearly 1.5%. ITC and Asian Paints both slipped over 0.9% each, and Bharti Airtel lost 0.8%. In sectoral indices at the BSE, for 15 out of 20 sectors ended with gains. In the top gainers, metal gained over 2.3%, BankX added over 2%, and commodities advanced over 1.8%. Meanwhile, in the laggards, services dropped 0.19%, tech and FMCG both slipped 0.17% each, and focused IT as well as information technology were marginally down 0.05%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,468 companies advanced. 1,478 stocks declined while shares of 112 companies remained unchanged. At the National Stock Exchange, 77 companies hit their 23-week high while 22 hit their 52-week low. Udayan, today of course the markets closed. Relief, would you say, for the markets because ended in green. But if we look at what's been happening for the past month almost, there's been a steady, the markets have been ending in the south, so to speak, steadily. And
what are the, when we look at the fundamentals of the country, very strong fundamentals. We have just had the GST figures for October. We've had the manufacturing PMI. Everything is going okay. India is one of the fastest, emerging economies. So what is wrong? What is it that's making the market so spooky? Well, one way of, breaking this down is to see where the markets were 6 months back. And if you see 6 months back to now, it's a pretty healthy increase. So what basically had happened, it was going as if it didn't have a brake system for a period of time. So sometimes what happens is when markets run ahead of themselves, and that was primarily because all the factors, it was like a perfect, all the boxes were getting ticked. Now what's happening, all the boxes that got ticked have got unticked. So, you got, the biggest thing has been the, when you buy shares that, which are, whose prices are on the up, you would want to see the earnings also moving, roaring and, being on the expressway. Unfortunately, that has not been happening. So then... We are talking about the Q2 results. Yeah. So then what happens is, and these are very prominent companies. Yes. So then what happens is, it's only legitimate that, you will try and, take corrective action. That's number one. China was not into play. They've been working hard, and there's a little bit of a play that's going on. My personal opinion is, after a certain point of time, that rotational play will subside, because then, you've got the allocations right. International, I'm talking about international players. Then, of course, you have the biggest headline of the day, yes, which is basically the US elections. And because it is the number one economy, and by such a long distance, and the amount of flows that happen from there, till you get a very good idea what's going on there. And there's a lot of difference, the two candidates in their way of looking things are there. So till the time you get a good sense, you don't want to take it's important to remember, when we're investing in stocks, it's a long-term investment. So let's forget all the trading that's done. But, when you're putting in very serious amount of money, then you want to know, okay, if I'm going to putting in this money, I'm taking this kind of risk. Then when is a likely time I'm going to make profits? When can I take it off the table? So these calculations keep happening, no matter what kind of technological tools you use. So all these things, 3-4 things, are unfortunately were not working, and some of these factors will be still at play, unfortunately. You mentioned China. So is China, because if we look at the movement of the FIIs, the way they've been behaving over the last month, is that a factor? Because China has been talking about, of course, bringing in some changes, bringing in some, its markets, propping up. They've been talking about that they were going to do something to prop up the market and to make China, the slowdown that we saw there, that the government is taking steps to reverse that. But is that really a factor, big factor? It's also not a small factor. It's a pretty decent factor, in my opinion. See, let's look at it this way. You've got an economy which is 6 times your size, our size, and then there is US. Okay, and I'm not talking about any other economy, because they are not worth talking at the moment. They're great economies, but they're not worth. So will I not put in money? If I were an international fund manager, I would obviously look at putting in money. I'll try to look at areas where I can make my money grow. So they will always be part of the calculus. There's no way that something as big, even if they grow at 5%, we grow at 7%, and China grows at 5%. Absolute amount is obviously much higher. Yes, out obviously. there. So therefore, they will always be in the picture. They had to do a correction. They probably have done it. But does that mean it's not a zero-sum game? As if they do well and we won't do well. Our economies, incidentally, is also interlinked. So if they do well, there are companies who are selling out their inputs. We are buying their output. From them. So we are interlinked. So it's not as if it's a zero-sum game. But yes, it's a factor that suddenly was that there is no other alternative kind of thing, that obviously that situation has got corrected. Okay. And it was about time that it got corrected. So stock markets, incidentally, are not high-paying fixed deposits. The values move up and down.
Okay, so the prices of the securities will move up and down, which is shares, and then you get dividends, etc. But in our kind of market, it's the price. So this is par for the course. What was not par for the course was the way it was growing. Would people like me have complaints? No, we don't. Am I surprised that something like this is happening? I'm not. Is the market healthier? Yes, because every time it will fall, it'll bring opportunities. Companies that were good, they were worthy of investment, have not overnight become unworthy of investing. Maybe you will not want to invest as much as you wanted to do in the past, and maybe it's a good time to reallocate. You sit back and assess. Yeah, rebalancing. You had too much in one particular sector, or you have too much in equities, and you want to move. So sometimes what happens is when the certain areas are doing well, you end up taking more risks that are associated with that asset class or that sector or whatever. So you can just these are good periods when you can clean up. It's a house cleaning. Diwali, just before Diwali, you clean up your house. So it's like those periodic cleaning and fixing. And I don't think there's a huge problem. We should not be overly concerned. That is where your fundamentals bit come in. Yes. That should give us conviction. Yes, it is not up to our corporate earnings have not been up to what expectations were. The expectation will get recalibrated. That's fine. उदयन, अगर हम सेंसेक्स की बात करें, पीक से लगभग 7 से 8,000 अंक नीचे तक आ गया है अभी. और ठीक आपने बताया कि जब ये चढ़ रहा था तो सारे बॉक्सेस टिक थे, और जब अचानक हुआ तो ये 7-8 हज़ार नीचे आ गया. इसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर जो मान रहे हैं वो एफपीआईज की सेलिंग को भी मान रहे हैं, जो आप बता भी रहे थे कि चाइना वो चला गया. लेकिन क्या जब तक एफपीआईज वापस नहीं आते हैं, क्या मार्केट हमारा जो है, जो पीक पर गया था, वहां तक वापस पहुंचने की कितनी संभावना है? और अगर पहुंचता है तो किस तरीके से पहुंचेगा? क्या डीआईआई से पहुंचेगा या हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं उनके सहयोग से पहुंचेगा? देखिए, हमारे जैसे इन्वेस्टर, आपकी आखिर में जो बात की वहां से शुरू करते हैं. अगर हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स का जो फ्लो जा रहा है वो ना होता, फिर तो क्या कहने, मतलब फिर तो इट वुड हैव बीन वेरी हो चुका. या तो वो हुआ नहीं, वो हम बेस लग रहा. सो वो एक मजबूती दिखा रही. क्या लोग नर्वस हो जाएंगे? क्या अभी तक ऐसी बात दिखी नहीं है. क्या वो कॉन्फिडेंस टूट सकता है? अभी ऐसी कोई बात नजर नहीं आ रही जिससे कॉन्फिडेंस टूटने वाली बात आ जाती है. हम लोग काफी ऑप्टिमिस्टिक रहे हैं. चारों तरफ हमारी जो इकोनॉमीज है वहां पे इतनी ऑप्टिमिज्म नहीं है जितनी हमारे यहाँ पे है. क्या हम इससे ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं. बेहतरी की बहुत गुंजाइश है. तो क्या ये उनके पार्टिसिपेशन के साथ ही ऊपर जा सकता है? जरूरी नहीं है, पर उनके साथ अगर आ जाते हैं तो वो रीस्केलिंग जो है, वापसी जो है, वो तेज हो जाएगी. अगर नहीं आते तो धीमी हो जाएगी. क्या धीमी बुरी है? जब तक स्टॉक मार्केट में जो रिटर्न्स हैं वो आपके इन्फ्लेशन से ऊपर रहता है, तकरीबन मान लीजिए तकरीबन 3 से 4%, मान लीजिए अगर आपकी मुद्रास्फीति 6% है और स्टॉक मार्केट आपको 10% दे रहा है, मतलब 3-4 साल के पीरियड में, क्योंकि शॉर्ट टर्म में काफी उतार चढ़ाव होता है, आई थिंक यू शुड बी ओके. आप अगर पीछे अलग अलग पीरियड्स में देखें तो आपको बहुत अच्छे पीरियड्स में आपको 11-12% दिखेंगे. उतने अच्छे पीरियड्स नहीं होंगे तब आपको 10 दिखेंगे. इन्फ्लेशन जो है, जो अगर आरबीआई का बैंड 4 से 6% वाला इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति का लेते हैं, उसके ऊपर अगर 4% होता है तो वो आपको जस्टिफाई करता है कि आपने रिस्क ली और उस पे आपका जो रिवॉर्ड है. और शायद यही वजह है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं बहुत अब जम के उसमें पैसा लगा रहे हैं. हालांकि जिन्होंने पिछले 1-2 महीने पहले लगाया था उनको भारी नुकसान हुआ है और वो थोड़े से सदमे में हैं. लेकिन उनके लिए तो यही सुझाव है कि आप बिल्कुल ट्रेडर न बने. अगर आप इन्वेस्टर हैं तो थोड़ा इंतजार करने से आपको नुकसान. देखिए, दो क्विक पॉइंट्स हैं. नुकसान तो तब है जब आपको इन्वेस्टमेंट को लिक्विडेट करना है, नहीं तो वो गेम चल रहा है. फर्स्ट इनिंग्स हुई है. आप ऐसा सोचिए कि ये ऐसा टेस्ट मैच है जिसकी इनिंग्स पे इनिंग्स चलती चली जाएगी जब तक आप नहीं कहते कि टेस्ट मैच ओवर है. तो वो उस टाइप का सोच आपको रखनी होगी. तो जब आपको, और अगर आपको पैसा कल नहीं चाहिए, जो कि नहीं होना चाहिए, तब तो आपको स्टॉक मार्केट में आना ही नहीं चाहिए था. अगर परसों पैसे चाहिए तो स्टॉक मार्केट वो जगह है ही नहीं.
ठीक है ना, लिक्विडिटी नहीं, ग्रोथ के लिए आपको रिस्क वॉलेटिलिटी लेनी पड़ेगी, रिस्क लेना पड़ेगा और लॉन्ग टर्म में रिवॉर्ड होगा। तो अगर ऐसा है तो फिर तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पर अगर आपने ये सोचा था कि 1 रुपए का 2 रुपए हो जाएगा परसों, तब आप मुश्किल में जरूर मुश्किल में। अभी हम और अनुभव बात ही कर रहे थे, छोटी सी आपकी ओपिनियन चाहिए कि मार्केट क्या ओवर वैल्यूड है? वैल्यूएशन जो है स्क्रिप्स के, क्या वो अभी बहुत कंफर्टेबल पोजीशन पे नहीं है? अभी भी नहीं है। अगर आप देखें अलग अलग इधर के पी प्राइस अर्निंग्स रेशियो जो निकल रहे हैं वो सब 22.7 के आसपास हैं जी। तो ये अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से निकाल रहे हैं। अभी भी आप मान के चल सकते हैं कि ये ओवर वैल्यूड, पर ओवर वैल्यूड तो कहते हैं ना, ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर। तो क्या है, अगर मुझे लगता है कि ये जबरदस्त तेजी के साथ मार्केट आगे बढ़ेगी, ग्रोथ, तब तो मैं महंगा भी ले लूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आगे चल के मेरे को रिवॉर्ड मिलेगा, नहीं तो बाद में मेरे लिए और महंगा हो जाएगा। तो ये तो निवेशक के ऊपर निर्भर करता है कि वो उसको किसको ओवर वैल्यूड मानता है। बिल्कुल, because what Harsh is saying about overvaluation, that is something that's been, this word has been doing the rounds for months now, like you said, because Indian markets have been doing phenomenally well, and even then the narrative was that the the stocks are overvalued, it's a heated market. And that's again, now when we're seeing this free fall in the market right now, that's again, this word has come back because the FPIs, as Harsh mentioned, they are going out because Q2 results are not up to expectations and the stocks were overvalued. Anu, I'll just sneak in a quick word on something. Where it might have a impact is the new issues that are coming. Okay. So if the secondary market doesn't do well, then getting out a new issue and making them successful, that becomes a challenge. So there's a lot of these IPOs lined up, so that might just be an implication. तो जो IPO आने वाले हैं, अब उनको देखना है कि वो कैसा करें। Udyan, if we look at the various sectors today, we see metal has gained over 2.3%. Is there a China factor here? Because we were talking about how the government there is, trying to bring back the economy on its, bring the economy back on the rails, and also they're saying that, the growth is picking up in Chinese economy. So is that a factor? It could be. I wouldn't be. I don't have a disaggregated picture in front of me, and that is exactly what I was telling you. That it's not as if we lose, they gain, and they lose, we gain. We are also interlinked. I mean, what we are doing, $125 billion of trade annually, and that's a lot of trade that's going on. So these things will be there. There will be people who will gain, and there'll be it'll be the investors will gain. विदेशी मुद्रा बाजार में आज $1 की कीमत 84 रुपए 11 पैसे दर्ज की गई। डॉलर इंडेक्स 103.73 पर कारोबार कर रहा था। Moving on to the next story, the Science and Technology Minister, Dr. Jitendra Singh, has said that India will launch the European Space Agency mission named Proba 3 next month from the Sriharikota Space Station. The mission will study the sun's faint corona closer to the solar rim. Addressing the India Space Conclave 3.0 in New Delhi today, the minister highlighted that almost every sector in the country is using space technology. He also added that space technology also fosters the creation of smart cities by providing navigation, satellite imaging, terrain mapping, among others. The minister also underscored India's vision to increase its contribution in the global space economy from 2% to 10% in the coming years. Space is a very hot sector right now. Space, in the budget also we saw a big chunk has been, allocated to this sector. We're talking of startups in this sector. How important, where do you see the Indian space sector going in the next few years? The minister is saying that we, aim to increase our contribution from 2 to 10%. We will become a big player. There are a lot of people who have ambition in space, but they cannot afford, say, a NASA, dealing with NASA. So we will be their providers. The other thing that will emerge, in my opinion, is there will be areas, niche areas. We will not be competing with a SpaceX or a NASA, but there will be specialized areas where these startups are coming up, where we are going to do pretty well. केंद्र सरकार ने हरियाणा, त्रिपुरा और मिजोरम के ग्रामीण स्थानीय निकायों को
वित्त वर्ष 24-25 के लिए 15वां वित्त आयोग अनुदान जारी कर दिया है। हरियाणा के पंचायती राज संस्थाओं और ग्रामीण स्थानीय निकायों को पहली किस्त के अंतर्गत 194 करोड़ 86 लाख 70 हजार रुपए का अनुदान दिया गया है। यह धनराशि 18 जिला पंचायतों, 139 ब्लॉक पंचायतों और 5,911 ग्राम पंचायतों के बीच वितरित की गई है। पत्तनपोत परिवहन और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि समुद्री उद्योग में भारत की क्षमता नीली अर्थव्यवस्था को बदल देगी, जिससे ये अमृतकाल के दौरान समुद्री व्यापार के लिए पसंदीदा स्थान बन जाएगा। आज चेन्नई में द वीक मैरीटाइम समिट में मंत्री ने कहा कि पुराने दिनों में तमिलनाडु वैश्विक स्तर पर समुद्री व्यापार के लिए प्रमुख स्थलों में से एक था। उन्होंने कहा कि सरकार अधिक रोजगार, धन और स्थिरता पैदा करने के उद्देश्य से भारत के उसी गौरव को वापस लाने के लिए उत्सुक थी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को पिछले साल $100 अरब तक का निवेश प्राप्त हुआ था। G20 में भारत मध्य पूर्व यूरोप गलियारे के विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को याद करते हुए श्री सोनोवाल ने कहा कि सागरमाला, सागर सेतु, सागर स्मृति जैसी परियोजनाओं का उद्देश्य भारत को मजबूत बुनियादी ढांचा बनाने के साथ पसंदीदा स्थान बनाना था। Moving on, India has made significant strides in reducing fossil fuel subsidies. The country has slashed fiscal support in the oil and gas sector by 85% from a peak of $25 billion in 2013 to $3.5 billion by 2023. The Asian Development Bank's Asia Pacific Climate Report highlighted the effectiveness of India's remove, target and shift approach in reducing fiscal subsidies in the oil and gas sector and facilitating clean energy investments. The report noted that the country had carefully balanced the combined effect of three key levers, including retail price, tax rate, and subsidies on the selected petroleum products to curb spending on fossil fuels. The Ministry of New and Renewable Energy said that India is not only striving to meet its ambitious net zero target by 2070, but also fostering an inclusive energy landscape. और एक नजर डालते हैं कि क्या कुछ चल रहा है वैश्विक शेयर बाजारों में। पहले बात करेंगे एशियाई बाजारों की। ज्यादातर एशियाई बाजारों में आज बढ़त रही है। चीन का शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स 2.2% बढ़ा। हांगकांग के हैंगसेंग में भी 2% से अधिक की बढ़ोतरी रही। जापान का निकेई सूचकांक भी 1% से अधिक बढ़ा है। सिंगापुर बाजार के स्ट्रेस टाइम्स इंडेक्स में मामूली बढ़त रही है। हालांकि दक्षिण कोरियाई बाजार में आज 0.5% की गिरावट दर्ज की गई। इस बीच यूरोपीय बाजारों में भी आज बढ़त बनी हुई है। लंदन का FTSE 100.17% तेजी पर कारोबार कर रहा है। जर्मनी के डैक्स में भी लगभग इतनी ही बढ़त बनी हुई है। फ्रांस शेयर बाजार के कैक 40 में भी 0.12% की बढ़त है। और अमेरिकी बाजारों का क्या हाल है अनुभव? US stocks ended slightly lower yesterday as investors remained cautious amid US presidential elections and the Federal Reserve's interest rate decision. The Dow Jones Industrial Average shed 0.6%, Nasdaq Composite slipped over 0.3%, and the S&P 500 fell over 0.2%. Udyan, a quick comment from you. The US Fed is slated to meet on the 7th. Last meeting, there was a rate cut, 25 or rather 50 basis points. What is your expectation? I would say another 25 basis points. And probably if that doesn't happen, that will be surprising. But nothing very sharp. But as always, the commentary is going to be very important. बट जो मार्केट है आमतौर पे इसने मार्केट ने फैक्टर इन कर लिया है कि 25 बेसिस पॉइंट लगभग हो सकता है, क्योंकि आमतौर पर उदयन हम यही देखते हैं कि जब भी रेट कट्स होते हैं शेयर मार्केट को बढ़ना चाहिए। लेकिन अभी इससे बड़ा फैक्टर वो है जो आज वहां वोटिंग चल रही है और ऊंट किस करवट बैठता है इस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि ट्रंप या हैरिस। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल अग्री करता हूं आपसे। Moving on, the demand for Nepali tea and coffee in the international market has been steadily rising. According to the National Tea and Coffee Development Board, 77 metric tons of coffee were exported during the fiscal year 2022-23, an increase from 72 metric tons worth 96 million rupees exported in the previous fiscal year. Nepal primarily exports tea to India, Europe, the US, Canada and other neighboring countries in the Asia Pacific. और क्रूड का क्या हालचाल है? क्रूड वेस्ट एशिया में जो संघर्ष चल रहा है उसकी वजह से बढ़ा हुआ है। जी, as you rightly said, Harsh, oil prices continue upward trend today. Brent crude was trading
0.6% up at $75.53 per barrel, and WTI crude gained 0.64% to trade at $71.93 per barrel when reports last came in. Udayan, do you think the fact that, if we, apart from what is happening in the Middle East, the fact that OPEC Plus bloc again have decided to, further continue with their 2.2 million barrels per day cut till December, that's also a factor here? Yeah, absolutely. And they'll keep an eye on how things are going on in China because they are the number one importer. So they are going to take a very, very hard look and they'll adjust their supply accordingly. सोने की बात करेंगे। सर्राफा बाजार में सोना आज बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था, यानी सोने की कीमतों में एक बार फिर बढ़त बनी हुई है। अंतिम समाचार मिलने तक भारत में 24 कैरेट सोना 0.04% बढ़कर 78,690 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था। वहीं चांदी की कीमत में भी 0.31% की बढ़ोतरी हुई है। 1 किलो चांदी खरीदने के लिए 94,820 रुपये आज देने पड़ रहे हैं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में भी दिसंबर में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का वायदा मूल्य 0.05% गिरा है आज वहां पर, और 10 ग्राम सोने की कीमत वहां 78,380 रुपये MCX में। वहीं दिसंबर में आपूर्ति की जाने वाली चांदी का जो वायदा कीमत है वो 0.19% बढ़कर 94,463 रुपये प्रति किलोग्राम पर इसकी कीमत चल रही थी। और Udayan, I would like to ask you a question about the gold and silver prices. Where do you think, do you see the shine continuing to continue, or do you see a little shine, a little fading away? Well, Anuva, one of the reasons experts are saying about this spike that has happened, one is the central banks have been buying a lot of gold. So that is number one. And then number two is uncertainty, political uncertainty, conflicts happening. So till those factors are at play, you will find interest in gold. But the kind of run-up, I have my doubts. In any case, for our listeners, if your overall value of your investments is 100 rupees, never cross more than 10 rupees in gold investment. I'm talking about financial gold investments. So it could be an ETF, and previously it was sovereign gold bond and things like that. Right. Moving on, the External Affairs Minister, Dr. S. Jaishankar, participated in the 15th India-Australia Foreign Ministers Framework Dialogue with his Australian counterpart today. Both ministers discussed India and Australia's neighbourhoods, Indo-Pacific, West Asia, Ukraine, and the global strategic scenario. In a social media post, Dr. Jaishankar said, India-Australia comprehensive strategic partnership is growing steadily. He said this is reflected in stronger political ties, robust defence and security cooperation, expanded trade, greater mobility and deeper educational linkages. India and Australia are very important players if we talk about the Indo-Pacific region, economically. So, what role, how do you see their economic relations growing? Quite a bit, Anubhav. There are things like pulses, which has gone up. There's coal out there. So Australia is pretty much a lot of commodity kind of supplier, and it is that particular. We have been looking towards Southeast Asia and Australia for a trade and strategically. So Australia will continue to remain a very, very important partner for us. The Income Tax Department has received 6,500 suggestions from stakeholders over the past month on review of the Income Tax Act. Finance Minister Nirmala Sitharaman today chaired a meeting on the budget announcement of a comprehensive review of the Income Tax Act 1961. केंद्र सरकार ने आवश्यक खाद्य पदार्थों की कीमतों को स्थिर रखने के साथ साथ किसानों को उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इस क्रम में उपभोक्ता खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में भारत ब्रांड चावल और आटा के दूसरे चरण का उद्घाटन किया। भारत ब्रांड आटा 30 रुपए प्रति किलो और भारत ब्रांड चावल 34 रुपए प्रति किलोग्राम के मूल्य पर उपलब्ध है। और आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, समय खत्म हो रहा है। उदयन आपाए, आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। And before we close, a reminder of the headlines. Domestic benchmark indices end with gains. Sensex adds over 690 points. Nifty reclaims 24,200 level.
India aims to increase contribution in global space economy from 2 to 10% in the coming years, says Science and Technology Minister Jitendra Singh. And global crude prices continue upward trend. Brent crude and WTI gains over 0.5% each. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, from the entire team, namaskar, goodbye. Namaskar. Market Mantra. Market Mantra.